to be an integral part of the Zee Jaipur Literature Festival for the 4th consecutive year and be a part of this incredible journey. We are honored to have played our part in facilitating this celebration of excellence. As always, we are amidst a veritable constellation of towering intellectuals who challenge notions, who inspire opinion, and even debate. I look forward to an invigorating 5 days. I hope you all enjoy them, as I know I will. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, to give the keynote address at the 10th Zee Jaipur Literature Festival, it is a pleasure to have two extraordinary poets from India and the United States of America. Please welcome India's most celebrated and beloved poetic figure who reaches across generations with his words. Ladies and gentlemen, Gulzar Sahab. Honorable Chief Minister Sahiba और आपका जयपुर और आपके जयपुर के लोग बहुत खूबसूरत हैं। आपने सिर्फ यहाँ की चार दीवारी ही नहीं संवारी और वो सारे काम जिनका आपने जिक्र किया है उसके साथ ये तमाम लोग शामिल हैं जो आपके साथ हैं और जो ये करते आ रहे हैं उन्हें एक रहनुमा की ज़रूरत है। आपने रहनुमाई दी, आपको मुबारक। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाले और डायरेक्टर्स को और संजय जी को, विलियम सर एंड निमिता। जिस वक्त उन्होंने यहाँ मुझे इस जगह पे आके कि मेन स्पीकर या गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं अपने एज गेस्ट इट्स ओके और मैं बड़े आराम से था, लेकिन वो जो गेस्ट ऑफ ऑनर लगा के एक बीच में खामखा एक आदमी कॉन्शियस हो जाता है, हालांकि अनकॉन्शियस भी नहीं रहा जाता, लेकिन तो इस कॉन्शियसनेस का क्या करे आदमी। तो इसलिए हाजिर हो गया। मुझे आदत नहीं, घबराहट होती है तकरीर करने से। मैं अक्सर इस नज़म सुना के निकल जाया करता हूँ तो बड़ा सुखी रहता हूँ। और लेकिन ये कि घबराहट की वजह भी यही है, मैं पवन जी से कल कह रहा था कि मुझे कई चीज़ों से घबराहट होती है, उसमें एक ये भी है कि मैं उस ऊंची कुर्सी पे बैठते हुए बहुत घबराता हूँ जिसमें पाँव नीचे नहीं लगते ज़मीन पर। और वो पाँव ज़मीन पे रखना बड़ा ज़रूरी है। जब कोई राइटर और ख़ासतौर पे जयपुर फेस्टिवल में एक कमाल खूबी है, इट इज़ कीपिंग द यंगस्टर्स टू ग्रो अप, young authors, young writers, it's helping them to grow up. And it's helping the grown-ups to keep young. And I think that's a very big contribution of this festival, जिनको 10वीं सालगिरह मुबारक हो। और लेकिन ये जिन
ऑथर्स के, राइटर्स के, शायरों के, अदीबों के, जब वो बड़े होते हैं कद ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पाँव फिर भी ज़मीन भी से लगे रहते हैं। वो जितने बड़े हो रहे हैं लेकिन पाँव ज़मीन पर हैं और वो मिट्टी पर हैं, और वो इसलिए उनका बड़कपन जो है वो नज़र आता है। आप फूल चाहे वो ऊपर की किसी भी टहनी पे लग जाए, वो जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो ऊपर का फूल नहीं खिलता, और वो उसे संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे खौफ भी होता है कि पैर अगर ज़मीन से उठ गए और वो कहीं घमंड और गरूर दाखिल हो गया तो आपके पाँव तो फिर मैले नहीं होंगे। और ये वो भी नहीं है, वो कैफियत भी नहीं है कि आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये वो कैफियत नहीं है। लेकिन जब पाँव मैले नहीं होते तो कलम भी स्याही चखना बंद कर देती है, उसके बाद कलम स्याही नहीं चखती, और इसलिए वो चलते रहना और रफ्तार। ये भी एक और घबराहट की वजह है मेरी कि ये डर लगा रहता है पता नहीं कब वक्त से हाथ छूट जाए, और वो पता नहीं चलता। ये वक्त हाथ छोड़ देता है या आप छुड़ा लेते हैं, ये छूट जाता है उसमें। बल्कि इसी के लिए मैंने वो चंद लाइनें लिखी थी जो मैं, जिसकी वजह से कागज़ रख लिया कि एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, बड़ी रफ्तार में था। ये जो आज की जनरेशन, जो इवन आज की, मैं सियासत नहीं जानता पर आम आदमी की तरफ सियासत मुझ पर असर तो करती है, और वो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह यंगस्टर्स आर टेकिंग ओवर। और कुछ चाचे ताए अब कोच पे बैठे हैं, अब सोफे पे, उन्हें सामने आने दीजिए, आपकी तरह संभालें आके। और उन्हें देखता हूँ तो ये ख्याल आता है इस रफ्तार का। एक ज़माना कल गुज़रता था गली से, बड़ी रफ्तार में था, ज़रा सा हट गया था मैं कि उसको रास्ता दे दूं, मगर मुमकिन नहीं था। वो टकराया, कहा देखो रुकोगे तो गिरोगे, न जाने कब कलाई फंस गई उसकी हजारों उंगलियों में। घिसटता डगमगाता उठता गिरता चल रहा हूं, मैं खुद से कह रहा हूं अब ज़माना चल रहा है, तुम रुकोगे तो गिरोगे। उफ, दौड़ दौड़ कर कदम मिलाता हूं, ये जिंदगी कितनी तेज चलती है। कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि मैं अगर ना लिखता तो क्या होता, कौन सा फर्क पड़ जाता है इस जमाने में या वक्त में, ये जानना भी बड़ा लाजमी हो जाता है कि आप खुद से भी कभी ये पूछ लें कि या मेरे लिखने से क्या फर्क पड़ा है, मैंने किस में शामिल हूं। और इन सवालों के जवाब देने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप अपने आप से उलझने लगते हैं, और ऐसे जवाब के लिए खुद में झांक कर देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। आप खुद को बहला रहे हैं या दोस्तों को बहला रहे हैं या अपने छोटे से हल्के को बहला रहे हैं। और ज़रा सख्ती से अगर आप खुद से पूछें तो ये पूछना पड़ता है कि आप खुद को बहका रहे हैं या लोगों को बहका रहे हैं। तो बात बहलने तक नहीं रहती, तो बहकाने में शामिल हो जाता है कि आप बहक रहे हैं, खुद बहक रहे हैं या दूसरों को बहकाना है। एक ज़माने को बहका लेना किसी अकेले शख्स के लिए मुमकिन नहीं है, चाहे तकरीर हो और चाहे वो नज़्म हो और चाहे आर्टिकल और चाहे कहानी हो, क्योंकि
आप एक छोटे से ग्रुप को, ये छोटे से मजमे को, छोटी सी जमात को, ये छोटे से हलके को बहका सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को नहीं बहकाया जा सकता, इसलिए कि समाज की, सोसाइटी की एक अपनी मजमूई शऊर होता है, एक जिसे कलेक्टिव कॉन्शियस कहते हैं, वो होती है, और वो फिर आपसे जवाब तलब करती है, ना आपको बहकने देती है, और आपको उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आप समाज से कितना जुड़े हुए हैं, आप जो लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, और उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, और उसके साथ जुड़े रहना पड़ता है, और वो जिम्मेवारी बन जाती है धीरे धीरे जब आपके ऊपर, तो तब ये सवाल आता है कि मैं क्या सही लिख रहा हूँ, या कितना लिख रहा हूँ, या क्यों लिख रहा हूँ, तब उसके जवाब आपके सामने आते हैं जब वो जिम्मेवारी महसूस होती है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि वहीं पर खड़े होकर जब मैं खुद से पूछता हूँ कि ये मेरे अंदर उबाल किस चीज़ का है, मैं मिसाल दिया करता हूँ लिखने की ज़रूरत कब महसूस होती है मुझे, जब मिसाल चूल्हे के ऊपर एक हांडी रखी है, एक पतीला रखा हुआ है और वो उबल रहा है, उसमें से भाप निकल रही है, ढक्कन रखा हुआ है, और जब उस भाप को निकलना है, जब वो उसके जमा हो जाती है, जब वो ऊपर से का ढक्कन खड़खड़ाने लगता है, वो खड़खड़ाने लगता है, जब उस वक्त मैं लिख रहा हूँ, उस भाप के अंदर लिख रहा हूँ, वो भाप मेरी लिखाई है, वो भाप मेरी नज्म है। मैं एक देखते हुए, हालात देखते हुए, अपने देश को, वतन को, मुल्क को देखते हुए, जहां इतनी ज़बानें खिल रही हैं, दुनिया के किसी इलाके में इतनी ज़बानें नहीं हैं जितनी हिंदुस्तान में हैं, और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल तो ये है ही जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, लेकिन ये दुनिया का, विश्व का एक बड़ा फेस्टिवल। यहाँ तो इतना खूबसूरत मुल्क है ना, यहाँ कोई खूबसूरत, कोई अच्छी बात होने लगे तो रोशनी है तो हम रोशनियों के फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं यहाँ पर, यहाँ पतंग है तो पतंग के त्यौहार हैं, यहाँ रंग है तो रंगों के त्यौहार हैं, और बड़ा खूबसूरत है कि किताबों का भी अब त्यौहार होता है, और इतना बड़ा होता है जितना जयपुर में होता है। और उन किताबों के साथ मैं बस एक ख्याल जहन में आता है, 10 साल मुबारक, 10 से आगे की गिनती में अगर मुमकिन हो सके तो हिंदुस्तान की किसी एक ज़बान को हर साल एक फोकस यहाँ ज़रूर बना दिया जाए तो खूबसूरत लगेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट की इस वक्त की शायरी जितनी हो रही है, मैं इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत तक मैं आपको एक किताब पेश करने वाला हूँ जिसका नाम है अ पोएम अ डे, और मैं कुछ 272 या 277 शायरों को, कंटेम्प्रेरी पोइट्री, उसमें मैंने उस्तादों को शामिल नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ कि उसमें गालिब नहीं है, टैगोर नहीं है, लेकिन आज की, बिल्कुल आज की पोइट्री, आज की जो शायरी है उसका अनुवाद किया है 32 ज़बानों से, और 200-250-300 शायरों को उनका अनुवाद किया है। तो तब पता चलता है कि इतनी ज़बानें और इतनी खूबसूरती से कह रही हैं, और उस सब में जो सबसे डायनामिक शायरी इस वक्त हमारे सामने आ रही है, अगर या मैं पेश करूंगा, या चॉइस मेरी है, या आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरे इंतखाब को, कि वो नॉर्थ ईस्ट की शायरी है, वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और वो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उस ज़िंदगी के उस हिस्से से गुजर रहे हैं, और इस वक्त सबसे डायनामिक शायरी वो है। और जिन्हें हम
रीजनल लैंग्वेज कह देते हैं, वो ज़्यादती है। हमारे यहाँ वो सारी की सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। आप बांग्ला को कैसे रीजनल कह सकते हैं? आप तमिल को कैसे, मलयालम को कैसे रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं? वो सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं और उनमें सब में काम हो रहा है। तो जी ज़रूर चाहता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की शायरी का मरकज़ अगर थीम या एक ख़ास एक फोकस सारे फेस्टिवल के होते हुए एक वो फोकस एक बार पैदा कर दिया जाए, या जयंत महापात्रा जैसे अगर एक शख्स को एजाज़ दिया जाए और उड़ीसा पोइट्री का थीम बना लिया जाए, उड़ीसी शायरी का, तो ऐसी कुछ एक छोटी सी, इतने साल आपके साथ आया हूँ और आगे भी चलूँगा जब तक हूँ। And I know this festival helped me to keep myself young, to participate in further also, और वो करता रहूँगा। लेकिन वही कि ये एक जगह नहीं, एक ज़बान में नहीं, इतनी ज़बानों में ये हांडियाँ रखी हुई हैं जिनमें उबाल आ रहा है, और वो सब कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, वो सब सुनने की ज़रूरत है। मैं उसी के साथ एक और बल्कि छोटी से कुछ मिसरे हैं, अगर के इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूँ कि उबलती हांडियाँ और इतनी सारी, सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है। ये जिंदगी बड़ी लंबी चीज़ है, और ये उबलती हांडियाँ और इतनी सारी, सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है। ये जिंदगी लेकिन न पकती है न गलती है, ये यूं ही चलती है। उम्मीदें डाल रखी हैं बिना छीले, उम्मीदें डाल रखी हैं बिना छीले, और बिना उनकी गिटक तोड़े। खमीरे ख्वाब जिनकी भाप उड़ती है, मगर हर एक हांडी गुड़ गुड़ाती है। उबलती हांडियाँ और इतनी सारी, ये दानिश्वर, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, इतने सारे शायर, इतने सारे अदीब जो आपके साथ हैं, जो यहाँ आते हैं, सभी मिलकर बिलोते हैं समंदर। हमारे यहाँ तो हमारी माइथोलॉजी सिखाती रहती है, ये दानिश्वर सभी मिलकर बिलोते हैं समंदर, निथारा करते हैं अमृत। मगर तिड़की हुई कुंभी में कुछ रुकता नहीं है, ये जिंदगी की कुंभी है, जो भरते हैं वो बह जाता है पानी में, उसे फिर से बिलोते हैं। उबलती हांडियाँ और इतनी सारी, सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है, न गलती है न पकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Shukriya, Gulzar Saab. And now, ladies and gentlemen, please welcome a phenomenal writer, performer, scholar, and activist who embodies the spirit of poetry in her work and life. Ladies and gentlemen, Anne Waldman. Thank you so much. What a great honor to be here in Jaipur at this extraordinary festival with its diversity and people from all over the world. And it's extraordinarily heartening at this time. And I'm so happy to be here on the eve of this terrible inauguration in my own country. And I want to send out a shout to my sisters, my mothers, my children, the women who will be marching in Washington, D.C. and around the country, to let the world know that this is not how we want to live. This is a dystopia. This is not what we are about as human beings. And it's so extraordinary to be in this environment with such love and devotion for literature, for humanity, for imagination, because that's what this is about. We're facing a war on the imagination. And we talk about post-truth, and perhaps when we're all robotic, that will be an issue. But as long as I stand here with my blood and pulse and heart here in Jaipur, I feel very sustained
and in a kind of zone. It's heaven. This is heaven. So I was asked to include a couple of pieces. I will bracket my remarks with brief poem songs. These are more performative. And the first is just a few lines from a piece I call Anthropocene, Anthropocene Blues. And this is the time we're in when nothing is not affected by the hand of man. Anthropocene Blues. Well, I looked over Jordan, and what did I see? Drones over Jordan coming after me, singing of the crimes of man. I've got those Anthropocene blues. Looked into my crystal ball, what did I see? Ghosts of the extincted ones coming after me. A heap of trouble coming after me. Karma can't buck it. Karma, we've done it. Manifest destiny. Manifest destiny. Looked into my crystal ball, what did I see? Cadres of human beings taking to the streets, coming to the Jaipur festival. Humans, cadres of humans, changing the frequency and waking up to the Anthropocene blues. So we might ask, these notes are called Looking into the Darkness of Our Time. We might ask the famous Adorno questions daily as the planet news sears our consciousness with its unmitigated barrage of violence, suffering, and acts of pathological cruelty. Can there be beauty? Can there be any creative act after atrocity? Can there be truth after atrocity? I think there is a resounding response in the affirmative for creative acts as practice, as daily practice. Tithe your time to be creative. As spiritual practice, one feels a necessity and a pulse. We can no longer have the leisure to question. Something sings in us urgent. There's an exhortation to help wake the world up to itself. And that, I think, is the purpose of art and literature, to help wake the world up to itself. This is a line from the poet Allen Ginsberg from his Memory Gardens. And while I'm here, I'll do the work. And what's the work? To ease the pain of living. Everything else, drunken dumb show. We do not need to be part of that drunken dumb show. There are enough people taking care of that already. And also to attend, as Blake summons us, to the little ones, the minute particulars of fragile existence, the minute particulars of how we work and attend to language, that language does not become endangered, the phones and phonemes of our mammal thrum. This has always been the case and still is the case, our bridge to communicate. We must be very attentive. So I've been asking the question, what does it mean to be contemporary with one's time? This is a question that Gertrude Stein asked in her What Are Masterpieces? And we have Ezra Pound's dictum, in the mind of the poet, all times are contemporaneous, which turns us to the great mystery and beauties of the archaic and how so much of the modernist poetics we inherit comes from these very palpable discoveries in Walt Whitman, for example, what we feed off of in the decipherment of the Rosetta Stone and the discovery of the cuneiform Gilgamesh, the discovery as well of libraries, old as cities, of the Chaldean sense that chaos meant without a library. So we will have total chaos without our literature, without our archives, without this attention
to this way we communicate and transcend through language, through poetry, through our hybrid work, through our stories, our fictions, our performances, our libretto, and so on. What new psychic inscription or magic of animal being or plant being, the wonders of the continuum, are continuing proof that we are not alone to earth our charge, and we must be able to communicate this. What is our connectivity, our adhesiveness, our pratitya samutpada, Sanskrit, as you all know, for the co-arising and interconnectedness of all phenomena. I speak of this often because of the paradox involved, this way of thinking about our time. The great philosopher Giorgio Agamben suggests that he, the contemporary, he or she, must firmly hold his or her own gaze so as not to perceive the light, but rather the darkness. We must look into the darkness of our time as a generative way to understand and interpret our world. The contemporary is the person who perceives the darkness of his or her time as something that concerns him, something that never ceases to engage him. Darkness is something that turns directly towards us. The contemporary is the one whose eyes are struck by the darkness coming from this time. Agamben goes on in his discourse on how the neurophysiology of vision, the absence of light, activates a series of peripheral cells in the retina called off cells. And when activated, these cells produce the particular kind of vision we call darkness. Darkness is not privative, but rather the result of the off cells, a product of our own retina. In an expanding universe, the most remote galaxies move away from us at a speed so great that their light is never able to reach us. So what we perceive as that darkness of the heavens is this light that, though traveling towards us, is also cannot reach us, since the galaxies from which the light originates are moving away from us at a velocity greater than the speed of light. So to perceive in this darkness the present, this light that's trying to reach us, this is what it is to be contemporary. One must fix one's gaze on the darkness of the epoch we live in, but also be able to perceive this light in that darkness that directed towards us is also moving at a distance. It's like, he says, being on time for an appointment that one cannot help but miss. So that leaves us in this struggle, in this form of it's too late, but it's too soon. It's already happened, it's not happened. And I think literature and poetry has to move to some of that liminal behavior, into this aporia, into the both of negative capability, of our imagination, being positioned on in the doorway. And I find an image from Indonesian Balinese dance and also in Kutiyatam, where the performer is poised in an archway and is static, and then something enables him or her to break through, to break into action. So rather than be paralyzed by this contradiction, we must be able to move into it. So I want to leave that image with you, and I will close with a mantra poem that's called Chenrezig Speaks. And Chenrezig is the Tibetan for Avalokiteshvara, and the legend has it that Avalokiteshvara and Chenrezig and Kuan Yin, they're all the same kind of male-female figures. They look down. One who looks down upon sound is the translation. And the Kuan Yin is perceiving the sound, the cries coming from below, that that figure is perceiving the world's lamentations and rises to help. So this is Chenrezig Walks Among Us. Swept away all suffering, gathered it up in a quantum leap, sucked it up till it returned. And when Chenrezig looked back over his shoulder and saw suffering, gathered it up, come back, came riding in, filling up nooks and crannies and crevices and templates of the world, all suffering, filling neurons,
quarks and leptons, troubling minds of fathers, mothers, lovers, all sentient beings suffering, toxins of passion, aggression, ignorance in the middle of the night, strapped by demon mind, nowhere to hide, all pounding, suffering, and Chenrezig wept, and head split in 1,000 pieces, and mighty red fire Buddha Amitabha into pieces leans in and puts the puzzle back together, wires it with tantric thread as some extra arms, extra heads, this wisdom body to rid the world of all suffering. More arms and heads take charge, build it better, and now Chenrezig had 1,000 arms in all directions of space, with numerous accoutrements, and under those arms 1,000 hearts better to banish all suffering, suffering of Tibet, of India, of Pakistan, wherever his crystal eyes land, all the maps of suffering keep emptying. Europe, USA, empty. Israel, Palestine, China, Russia, Japan, more wisdom bodies in all the pores of this body. Chenrezig walks among us, humble prince, toward all systems of empire. All his precious ink, diamond scepter, skull cup of blood, thibo trumpet, dissolve in mind, and lotus at his feet arises again through cracks of a concrete city or charnel grounds, eternal war. Star flowers shoot at dark of a distant galaxy, anywhere out of this world. His heart is that big, and Dharma gates are endless, entering everyone, and will relight the butter lamp of the dark age, banish the syndicates of samsara, put away your texts of doom. Chenrezig walks among us, and no identity endures, yet bodhisattvas are active, invisible elves, swirling shamans, shape-shifting wizards, every hour dedicating the merit. No end time here, no end time here, but aspiration to press harder. Don't tarry, don't tarry, don't tarry. Keep trying to sweep all suffering away. Keep vow with mudra, mantra, every thought for others, golden thread of enlightening in every step. And in all darkness, oh, push, push against the darkness. Push, push against the darkness. Push, push against the darkness in all directions of space. Our Cartesian doubt, our quantum dimensions to worry, while Dharma bends in all dimensions simultaneously. An extinction is nothing but the extinction of all suffering inside, the extinction of self, whose form is emptiness, to power of compassion. Chenrezig walks among us, scientist of compassion. Oh, push, push against the darkness. 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 Thank you. Thank you, Anne. Thank you. That was just wonderful. And thank you to all our audiences, all our partners, our sponsors, our supporters, Government of Rajasthan, Police of Rajasthan, all the other bodies, all of you. Thank you. May all of you have a great festival.
Thank you. Namaste. Welcome to the Z Jaipur Literature Festival 2017. In case of an emergency, please remain calm. Our volunteers and security staff will guide you to the nearest emergency exit. All emergency exits are clearly marked. There are 2 emergency exits at the front lawn. Both are located stage left. There is 1 general exit from the front lawn. Please ensure all exits and aisles are kept clear at all times. Our medical assistance desk is located at the main entrance and is available for all medical emergencies. Wheelchair facilities are also available near the medical assistance desk. Smoking is strictly prohibited at the festival. Please help us keep the venue clean. Thank you for your cooperation. Namaste. Welcome. Video.